वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग भुवनेश्वर इन अ Lamborghini Huracan फीचर्स Autocar इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Autocar कितना अच्छा लग रहा था मालूम। शॉट बहुत अच्छा था। आवाज लगी गाड़ी अच्छी होगी। We are on an ongoing quest to find quaint and interesting but perhaps unlikely places around India where you can enjoy driving a supercar. And today, that quest brings us to Orissa, the land of temples. And me, well, I'm glad to be reunited with my old friend, the Lamborghini Huracan Evo. Now, unlike the other places we'll be visiting in this series, the difference with this place is I've actually been here before. This is the Puri Marine Drive and it is an amazing stretch of road. We're just about 40 kilometers outside the city of Bhubaneswar. And when I heard that we were coming to Bhubaneswar, I came here to this stretch of road right away. It's straight in places, but it curves every now and then, making for a little bit of excitement and a great show of this car or any car's potential. ऐसे मजा भी ऐसा आता है कि रोड इस तरह की हो ना, बिल्कुल साफ सुथरी। Now this road is generally pretty well surfaced, but it does have its fair share of undulations as well. And even though I've got the car in sport right now, it's not too uncomfortable. You do get jitter around a little bit left to right, but that's all part of the fun. I could put it in comfort mode, but hey, you wouldn't get this noise. बाहर वाले कहते होंगे कितना शोर है। Now, of course, I do know this stretch of road quite well, but I don't know the rest of Bhubaneswar all that well. So, once again, I've enlisted the help of a local. In the party, I feel my heartbeat. At the bar, right where she might be. Breakdancing on the sidewalks. And well, here he comes now. Edible Shannon. The blue blur blitzes by and starts to slow down in front of me, but I signal him to keep going because this road is just too good to be true. So off we go. लोग भी देख रहे हैं। Right where she might be. Breakdancing on the sidewalks. From the white chalk. The sense of familiarity turns to confidence, making its way from my brain through my palms as they grip the Alcantara steering wheel and to my right foot as it rests resolutely on the accelerator pedal. It's quite a heady pace too, and I feel the LDVI system, the Evo's electronic brain, is getting a pretty decent workout. But then, suddenly, the trees fall away and it appears in all its glory, the Bay of Bengal. गाड़ी और अच्छी रोड के साथ। Now we've come up to the seaside, and oh boy, the vibe has just changed entirely. Isn't that just a sight for sore eyes? It's so pretty. Well, I suppose it's nice to have this as a backdrop for what I'm driving right now. Maybe we can take a breather then and let the cars cool off in the sea breeze.
and it will be a good time to meet my host, Bhubaneswar resident and all-round great guy, Arpit Mohanty. Arpit, hey, nice to finally meet you. Hello Gavin, welcome to Odisha. Thank you. And this is the best thing about Odisha is it's the hidden secret of India actually. I've heard that, but luckily I have been here once before, and well, I've been to this road once before. I knew I just had to come back. It's really beautiful, it's really nice to drive, and well, unfortunately that's all I know about it. I don't know anything Don't else worry, about I'll it. make you more familiar Oh, thank you. to this place. Thank you very much. Let me tell you, this is the famous Konark Puri Marine Drive. Nice. So this side stays the Konark temple, Konark. which is famous for the sun temple. And there is the famous Jagannath temple Okay. of Lord Jagannath. So I've been to a lot of beach towns all over India, and it's really impressive how clean this one remains. But what's also impressive is your car over there. It's a very special edition, the Aveo. Absolutely. So what made you choose the Aveo specifically? So to be very honest, I booked one 580-2. Right. So 15 days before my delivery, I got a call from Lamborghini Delhi that there's a special edition car available for you. I wanted something in a good color actually. And blue being my favorite color, I asked them that is there any possibility there's an availability with blue? And luckily they said that you are very fortunate that we have one car and that is available with blue with a white stripes. And let me tell you more about this car. Please do. Tires This paint देखो. and this striping, this is totally painted. It's not no stickers, no wrap. And this L63, it has a meaning to it. Of course. L63 is to run tribute to the Italian Air Force actually. Amazing. And this is one of 250. Amazing. So not only is it one of 3 in India, it's one of 250 in the whole world. Yes. And it's otherwise pretty standard. Have you done anything with it? No, I put on sports exhaust in because I wanted to be a bit aggressive. And the interior is, if I show you, the interior is all Alcantara. Okay. And you have a special badging of L63 on the seats. But more than anything else, I'm very curious about that exhaust of yours. I really want to hear what it sounds like. So, should we go for a drive? Sure, why not? Let's do it. Let's do it. catch up on the road then. Yeah. अच्छा, वैसे देखने में देखो एक जैसी लग रही है ना? पर थोड़ी सी डिफरेंट है अभी मैंने देखा आगे से Back on the marine drive, the two Huracans roar back Newsviewsandupdates towards side. Bhubaneswar. With Arpit in the lead, I can let my guard down a bit and carry even more speed. And he's not showing any signs of slowing down either. And why should he? The roads are just brilliant and conducive to putting down every last one of his 610 horsepower. ये वाली shot. Or in my case, 640. Rear wheel steer, torque vectoring and the 4-wheel drive system, they're all working together to make my life so much easier in the Huracan Evo. The pair of Lamborghinis make a relatively subdued entrance into the city. Weaving calmly between the rickshaws and motorcycles, I do notice one thing however. The roads are impressively wide and well marked here, and there's a pretty decent sense of order to the traffic. I don't even have to exercise the nose lift function too often because the speed breakers all seem to be built to a comfortable regulation size. What a welcome environment in which to drive a supercar. Bhubaneswar may be traditionally known as the city of temples, but it is also classified as a smart city. So you want to have a round of the city, of a beautiful city of temples? I'd love to. I'd love to. So this is basically the Bhubaneswar market section. So if you see, there's all buildings and malls out here. So this is the main hotspot for the youngsters out here. I also like that the roads are nice and wide here. Must make driving a Lamborghini quite easy, huh? So the only problem out here are the few auto rickshaws. And other than that, people do appreciate the car. Yeah, you seem like you're used to driving this every day in this sort of traffic, huh? Basically, this is my weekend drive road actually. So I used to explore the city. So I've been here for last 12 years. Oh, very good. It's a pretty decent road and people are good out here. So it's the city of temples, is it? Are we? Do you think we'll see any temples around town today? Definitely, we'll be heading to one of the famous temple out here. It's Ram Mandir in Bhubaneswar.
So there's a very good location. We can go out there. Hope the traffic is not troubling you out here. Oh, I'm okay. I'm actually quite used to it myself. I live in Mumbai, so we're used to driving in traffic like this. But this, at least you have big wide roads here. That we don't have in Mumbai. But people do ignore the fact that a supercar can't be used in this city, in Bhubaneswar. So let's break that myth. Right. So Gavin, on your right hand side is the famous Ram Mandir temple I was talking about. You can have a good view of it. Oh, nice. Okay, it's right here. Amidst all the bustle on the main street, we stop for a few photographs outside the temple. Understandably, the cars are swamped by curious passers-by, and we're quick to get moving again to avoid causing a traffic jam. But that small crowd aside, road users here are quite comfortable with supercars, and Bhubaneswar has quite a strong enthusiast community. After an absolutely divine Oriya meal, we bid farewell to Arpit and head around town for one last blast as the sun goes down. भाई लैम्बोर्गिनी की बात करें तो लैम्बोर्गिनी जो है देखकर मुझे एक गाना भी याद आ गया, लैम्बोर्गिनी चलाई जाती है, लेकिन उसमें येलो कलर की लैम्बोर्गिनी थी। लेकिन आज की लैम्बोर्गिनी की बात की जाए तो कलर्स बहुत अच्छे थे दोनों के। वैसे दोनों में से ज्यादा अच्छा कलर कौन सा लगा था? सही बताऊं, मुझे लगता है ब्लू वाला कलर, क्योंकि सब ब्लू ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ तो काफी अच्छा लगता है वैसे ब्लू कलर। अच्छा वैसे मैं सोच रही हूँ, देखो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है भाई, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार है और उसकी जो इंटीरियर है और जो उसका एक्सटीरियर है उससे पता चलता है भाई कि पैसा ही पैसा इस पर खर्च होता है। बट मैं कहती हूँ उससे भी ज्यादा जो हम कह लेना कि एक एडवांस स्टेप आ जाता है वो ये कि भाई कुछ ऐसे एडिशंस बनाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं, या आप ही कर लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन, फिर वही बात है, अमीर लोगों के अमीरों वाले शौक होते हैं भाई। और इवन के मैं अक्सर देखती हूँ कि कुछ ब्रांडेड शूज भी ऐसे होते हैं जिनके बड़े लिमिटेड आर्टिकल्स आते हैं और लोग उनको बहुत महंगा महंगा खरीदते भी हैं। यार मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो है ना एक ही चीज जो है ना, मैं कहूंगा कि इंडिया में मुझे आज पता चला कि भाई लैम्बोर्गिनी का शोरूम भी है। मुझे से पहले नहीं था मालूम कि लैम्बोर्गिनी का शोरूम भी है। अच्छा ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर अच्छी गाड़ी का कार के आपको शोरूम नजर आएंगे, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि भाई अभी इतनी देर से वीडियोस हम लोग बनाते आए हैं, सो इतना तो आइडिया हो गया कि लोगों के पास, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें बहुत ज्यादा आई थिंक लैम्बोर्गिनी थी जो हम लोगों ने देखी थी हमने, लेकिन मुझे पता क्या था कि शायद जो है ना इंपोर्ट की जाती होगी, लेकिन जो है वहां पर इस तरह जिनकी शोरूम्स हैं वो मुझे नहीं था मालूम कि इंपोर्ट तो वैसे भी की जाती है यार। यहाँ पे अगर बात की जाए ना, यहाँ पे इंपोर्ट अगर वैसे क्या है, मैं लैम्बोर्गिनी तो नहीं देखी, लेकिन अगर जो थोड़ी सी लग्जरी गाड़ियां होती हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है आपको अमूमन शोरूम्स पे नहीं देखने को मिलती। आपको जो है जो डीलर्स होते हैं डिफरेंट उनके पास देखने को मिलती है। हाँ, तो बेसिकली मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर शोरूम मुझे यहाँ पे कभी देखने को नहीं मिला। भाई अमीर लोगों का मुल्क है और अमीरों वाले शौक होते हैं फिर लेकिन ये हकीकत है वाकई में। मैंने भी यहाँ पर, मुझे नहीं पता, नहीं हो सकता है कहीं एक दो हो, बट मैंने नहीं स्पोर्ट्स कार देखी, लैम्बोर्गिनी तो नहीं मैंने देखी। तो मैंने खुद नहीं देखी, मैंने खुद अभी तक नहीं देखी। दूसरी मैंने देखी पोर्शे मैंने देखी है, लेकिन उसमें भी स्पोर्ट्स नहीं देखी, उनकी जो नॉर्मल रूटीन की जो
BMW, मर्सिडीज ये जरूर देखी है लोगों के Audi भी देखी हुई है। Audi भी देखी है, हाँ बिल्कुल, लेकिन स्पोर्ट्स कार में मैंने बहुत कम देखी है। वैसे मैंने अभी तक पाकिस्तान में की रोड पर किसी के पास वो वाली गाड़ी भी नहीं देखी यार, वो बड़ी अच्छी रोल्स रॉयस भी नहीं देखी किसी के मैंने पास। भी नहीं, बाकी मैंने भी नहीं देखी। आप यानी कि जाते हैं ना दुबई जाते हैं तो वहां पे तो गाड़ियां जो है ना वो तो मतलब शक्ल ही चेंज हो जाती है ना, वो तो लगता ही नहीं कि इस दुनिया की गाड़ियां हैं, यानी कि वहाँ पे आपको सारी अमेरिकन जर्मन गाड़ियां जो है वो देखने को मिलती हैं। और अगर वहाँ पे आपको जो है टोयोटा वगैरह देखने को मिल भी जाए तो वहाँ पे ऐसे टैक्सियां जो है वो चल रही होती हैं, ठीक है ना। वहाँ पे यहाँ पे जिस बंदे का कैमरे गाड़ी होती है ना उसका एक बड़ा नखरा होता है, बड़ा नाक होता है, वहाँ पे वो टैक्सियां चल रही हैं। और भाई कोई बात नहीं, चलो वैसे इसलिए कहते हैं कि ट्रैवल करना चाहिए, आपको पता चलता है भाई दुनिया किस किस रंग की है, लोगों के शौक क्या क्या है। बिल्कुल। बट हाँ मैं ये जरूर चीज मानती हूँ कि इंडिया में आपको महंगी से महंगी गाड़ियां जरूर नजर आएंगी ऑन रोड, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ऐसी गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। और जो रोड्स हम लोगों ने देखी हैं भुवनेश्वर की, एक तो वैसे मुझे बहुत खूबसूरत भी लगा और बहुत साफ सुथरा लगा जितना हम लोगों ने देखा है। इवन के जो सिटी में आकर भी उन लोगों ने जहाँ पर रोड्स हम लोगों ने देखे, साइड्स देखी, वहां पर भी काफी साफ सफाई थी। प्लस एक चीज मुझे बड़ी कॉमन लगी है हमारे पाकिस्तान और इंडिया की, गाड़ी जहाँ पर खड़ी थी ना लोग पिक्चर्स ले रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। यहाँ पर भी ये सीन होता है, कोई अच्छी गाड़ी हो लोग ऐसे पिक्चर्स बनाते जैसे उन्हीं की गाड़ी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो लिबर्टी में जो है ना साल में एक बार जो है ना गाड़ियों का और बाइक्स का जो है वो शो होता है। वहाँ पर जो है डिफरेंट यानी कि जो गाड़ियां होती हैं वो आते हैं, लोग आते हैं बाइक्स अपनी लेकर होती हैं, तो बड़ी सारी पब्लिक वहां पर जाती है, जाके तस्वीरें खींचती है। बिल्कुल सही बात है, देखती हैं। तो वो फीलिंग जो है आपको ये भी देकर आ रही थी कि दो अच्छी गाड़ियां जब खड़ी हो ना तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई आपका ऑटोमेटिकली दिल करता है कि आप हाथ लगाकर उस गाड़ी को देखें। वैसे इस गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के अंदर से क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, यानी कि आपको एक ये वो प्रीमियम मजा देती है भाई। प्रीमियम गाड़ी हो तो प्रीमियम मजा ही देंगी। बात ये भाई कि ऐसी गाड़ी को दिल करता है हाथ लगा कर देखते हैं। मजा कभी गाड़ियों को हाथ लगाया किसी गाड़ी को ऐसे यार अच्छी लगी यार अब तो नहीं मैंने कभी किया। हाँ बचपन में क्या नाम लेते हैं जब नहीं था इतना ज्यादा, तो कोई अच्छी गाड़ी होती थी ना बंदा देखता था कि यार गाड़ी इतनी मजे की है। देखते तो सब देखने और किसी गाड़ी को हाथ लगाने में फर्क होता है। हाथ में से कभी नहीं। हाँ मैंने ये सोच रही हूँ हाथ लगा के कौन चेक करता है कि भाई ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, दूर से अच्छी लग रही है तो बस सही अच्छी लग रही है। नहीं यार कि लोग देख ही लेते हैं, किसी को पसंद हो हाथ लगा के। बोलना चाहूंगा किसी गाड़ी के साथ पिक्चर्स बनवाई है? नहीं आज तक नहीं बनवाई। वैसे मुझे बड़ा अजीब लगता है वैसे ये सारी चीजें करना, मतलब अच्छी चीज की आपको वाकई में तारीफ करनी चाहिए और वो खूबसूरत भी लगती है। बट ये है कि भाई लैम्बोर्गिनी का मुझे सबसे जो बेस्ट चीज लगी है वो उसका इंटीरियर लगा। और डेफिनेटली जिन लोगों को स्पोर्ट्स कार पसंद है उनके लिए तो ये एक ट्रीट है। हमारे जैसे लोग जिनको ज्यादा पसंद, अगर मैं अपनी वैसे बात करूं तो मुझे तो बिल्कुल एक सादी सी गाड़ी अच्छी हाँ बिल्कुल रेंज रोवर भी मुझे अच्छी लगेगी, वो भी मुझे सादी है। रेंज रोवर इतनी लग्जरी कार है, ठीक है ना, सादी सी कार है। रेंज रोवर मुझे बहुत पसंद पता है तब से है जब मतलब मैं स्कूल में टीचिंग करती थी ना तो एक बच्चा आता था रेंज रोवर में, और तो भाई बहुत एक खूबसूरत सी गाड़ी लगती थी मुझे। उसकी फ्रंट ग्रिल ही बहुत खूबसूरत है। हाँ पर उस गाड़ी की ना अपनी एक उसका रोब है, उसकी एक शान है। लेकिन ये कि लैम्बोर्गिनी में बात कर रही हूँ कि ये एक ना मतलब डिफरेंट कैटेगरी में आती है स्पोर्ट्स वाली में, जिसमें लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं गाड़ियों के या उनके लिए। हाँ उनके लिए, जैसे हम लोगों ने वो देखी ब्लू वाली भी। और जैसे उन्होंने बताया भी बिल्कुल डिटेल्स भी बीच में बताई। सो आई थिंक ये अपने शौक की बात होती है यार। वो एक कहावत है ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। तो वो जिन लोगों के पास है ऐसी चीजें जो बहुत लग्जरी आइटम्स होते हैं जो कि एक आम बंदा भाई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहां से देख के आप ये चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप चीजें लेना चाहें तो आप बस शौक आपको होना चाहिए। मैं भी थोड़े दिन पहले एक पढ़ रहा था एक ब्लॉग पढ़ रहा था, तो उसमें एक शख्स ने जो है वो पैसे जोड़ जोड़ के गाड़ी लेने का बहुत शौक था, ठीक है ना। उसने अपनी गाड़ी आखिर ले ही ली। कौन सी गाड़ी ली थी? गाड़ी का मुझे अब भूल गया, लेकिन इंडिया का ही कोई वो बंदा था, तो उसने गाड़ी खरीद ही ली। वेरी गुड भाई, ऐसे लोग ही
मोटिवेशन बनते हैं कि हम लोग बिल्कुल। भी खरीद सकते हैं गाड़ी। बट ये है कि लैम्बोर्गिनी लेने के बारे में ही हम सोच सकते भाई ये हैं। तो बहुत लग्जरी गाड़ी है ना, वैसे में अगर शो का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अच्छा वैसे मौसम, तुमसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी है भाई? यार अगर पाकिस्तान लोकल मार्केट के हिसाब से बात करूँ ना, तो मुझे अगर वो तो मुझे पता है तुम्हारी कौन सी है। नहीं विड्स तो वैसी एक बजट वाली गाड़ी है ना, कि उसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत अच्छी है, तो मुझे जो है ना ऑडी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। शौक चेक करो, ऑडी अच्छी यार देखिए शौक है, फिलहाल ले नहीं सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन शौक तो है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। अभी नहीं ले सकता, कर दो। हाँ नहीं गिफ्ट नहीं चलाने के लिए दे सकता हूँ। नहीं यार गिफ्ट कर देना, ठीक है। एनीवे गाइस, काफी मजा आया। मैं ये मुझे फिर कहेंगी मैं पीछे बैठी हूँ, ड्राइवर चलाना। ओके सो चलें अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट कार, स्पोर्ट्स कार फेवरेट कौन सी है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, विद कलर के कलर कौन सा अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।